Okay, so what you have done yesterday? हाँ, क्या किया था? India, वो over हो चुका. I think I have to download a new PPT for EU. You got your that notes? Have you got that? अभी तक नहीं मिले. कल भी मैंने बोला था दोबारा से. मैं कितना बोलूं? मैंने कल जेंटल रिमाइंडर भी भेजा है क्लास पीपीटी पे. नहीं, सिर्फ मेल करना पड़ता है. आई सेंड एक सेकंड. हाँ, कार्तिक किस पे भेजा? इसे हम स्टार्ट करते हैं बाय द टाइम पीपीटी इज गेटिंग अपलोडेड. सो क्या मतलब होता है इन चीजों का, फिर हम जाएंगे इस चीज पे कि इंडिया एंड ईयू रिलेशंस. ठीक है, वो सेकंड स्टेप होगा. नॉट दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड ईयू. So how do you think EU is different from other countries? What is this EU? What is union is known as and what are its benefits? क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो सबको समझ आए. हाँ. हाँ. ओके. ट्रेड बैरियर भी नहीं. तो कैन आई से दैट EU इज very very strong as compared to single countries? Why? तो ग्रुप होने से क्या वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है अपने आप? कैसे? कैसे सपोर्ट है इकोनॉमिकल, ये बताइए. करेक्ट, दे वर्किंग एज ए यूनियन. दैट मीन्स अगर वो यूनियन की तरह काम कर रहे हैं तो नो वन विल हैव अ व्हाट a greater say, सबका equal say, and then you are deciding something. So when I talk about EU, right, so you are giving, all the countries are giving some share of their sovereignty. When I say sovereignty, that means their decision on some issues, on some sectors, for example trade, for example taxes, for example security. So all of this sovereignty they are giving to union. यूनियन को कौन, ये यूनियन क्या है? वो यूनियन भी इन लोगों ने ही बनाया है मिलके, राइट? हु आर डिसाइडिंग द लॉज व्हिच शुड वर्क ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री यूनिफॉर्मली. दे आर स्टैंडर्डाइज्ड. ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर टैक्सेस ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा. वे इज दैट दिस इज नॉट द राइट मैप फॉर दिस. ये ठीक है. सो ऐसा नहीं है अगर फ्रांस में टैक्सेस ज्यादा है तो आपका हंगरी में कम होगा, या फिर दिस इज एक्चुअली द डिफरेंट लैंग्वेजेस दे हैव रिटन. हाँ, नॉट दिस. सो यहाँ पे ये बेल्जियम है, ठीक है. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है. दिस इज आई रियलाइज जस्ट नाउ ओनली, ठीक है. इट इज गोइंग टू बी सेम. और अगर सेम रहेगा तो व्हाट विल हैपन, ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? अब आप देखिए,
earlier what used to happen, world war second से पहले या उसके बाद भी what used to happen, if I have to trade between this country Italy and a different part of the European countries, then I have to put taxes here, then taxes here, then taxes here, and taxes here. मेरा तो profits diminish हो जाएंगे, right? So what I have to do in order to maximize my profit, I need to at least bring some laws which can be beneficial for all of them as a union. ठीक है, as a union. All right. जब हम nation state, what, how many of you understand nation state? What is a nation state? Modern state, nation state, right? Modern state क्या है? Simply बताओ एक nation state क्या है? जिसके पास टेरिटरी है, राइट? जिसके पास गवर्निंग बॉडी है, राइट? और क्या है? डिफाइंड टेरिटरी है और एंड सॉवरेनिटी, राइट? ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? नो ऑफ नो यूज. ठीक है, मैंने अपनी डिसीजन पावर किसी और को दे रखा है, तो देन आई कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ माय नेशन. सो व्हाट आई हैव टू डू, दिस सुप्रानेशनल कोई आपको फोर्स करके नहीं बनाता है, ठीक है? इनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फोर्स करके नहीं बना रहा है. This is something they are doing on their own, by their own choice, right? If had it been a forced, a coercion kind of a union, then UK did not have done Brexit. Brexit means कि आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं if you do not want to be a part of it. ठीक है, तो ये अपनी मर्जी से साथ में रहे हैं, right? And till now only other different parts of the European countries are adding on to it. They want to be the part of it. उससे क्या होगा, इनका करेंसी सेम है, राइट? जो प्राइस रेट आपने रखा है वही है. अगर आपका फाइनेंशियल या टैक्सेस में कोई बात होगी तो वो भी सेम रहेगा, राइट? Everything will be same, right? First we'll discuss about unions, right? What is this European Union is, what is the supranational is. First we have to describe what is supranational सबसे पहले. उसके बाद EU पे आएंगे. EU क्या होता है, उसकी कमीशंस वगैरह क्या होता है. Although you don't have to get into so much of detail, I'll just tell you superficially what is EU commission, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, right? But आपको पता होना चाहिए, if I'm talking about EU commission, that means what. ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि मैम कैन दे नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस ऑफ देयर कंट्री. दे कैन टेक, पर कुछ कुछ चीजों में दे कैन नॉट हैव देयर ओन डिसीजंस, राइट? अगर दे आर पार्ट ऑफ समथिंग, देन दे हैव टू फॉलो द बॉडी. ईयू कमीशन ने जो चीजें लेकर आए हैं, जो डेलीगेट्स लेकर आए हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको इस तरह से करना है, एंड देन दे विल फॉलो इट. दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉर द ईयू कंट्रीज ओनली. ठीक है, सॉवरेनिटी तो हर स्टेट के पास है ना. अभी डिफरेंस नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ ये बताया कि नेशन स्टेट क्या है. हाँ, करेक्ट. हाँ, वो सॉवरेनिटी वो एक ही बात है, जो आप अलग अलग बोल रहे हो ना, वो एक ही बात है. लिखिए, व्हाट इज सुप्रानेशनल. व्हाट इज सुप्रानेशनल. व्हाट इज सुप्रानेशनल. What is supra? Write down. A multinational union. A multinational union or association. A multinational union or association in which member countries, in which member countries cede authority. Cede मतलब दे देना, ठीक है? To give. CEDE, cede authority and sovereignty on at least some internal matters. Sovereignty and authority on at least some internal matters to the group.
whose decision are whose decision are binding, whose decision are binding on its member, on its member. On its member. Write down EU, United Nations, EU, comma, United Nations, and WTO. And WTO are all supranational groups. Are all supranational groups. See, this is only with respect to the region. This is irrespective of the region. This is also irrespective of the region. Many countries are the part of UN now, WTO. This is a World Trade Organization. This is your United Nations, and this is your European Union. This is with respect to the geographical region because European it has been written in that. Okay? Write down. In EU, each member votes on. In EU, each member votes on votes on policies that will affect each other member nations, that will affect each other member nations. Right? Now write down the key features. Key features. लिखिए transfer of sovereignty. First point, transfer of sovereignty. Transfer of sovereignty. किसको spelling में problem है, just let me know. SOVEREIGNTY, sovereignty. Member states give up some of their sovereign powers. लिखिए member states give up some of their sovereign powers to EU. Sovereign powers to EU in specific policy areas. In specific policies areas like trade, comma, agriculture or environmental regulation or environmental regulation. Next point, binding decisions. Binding decisions. EU institutions have the authority to make decisions and enact laws, to make decisions and enact laws. Dhruv has joined online, Bhavya, Afreen, Ragidi. Okay. कौन सा पॉइंट बताइए? EU institutions have authority to make decisions and enact laws that are binding on all member states. That are binding on all member states, comma, regardless of their national governments opinion. Second is own legal framework. Next point, own legal, उनकी खुद की legal framework.
EU has its own legislation. Okay? They have their own legislation. That means they have their own legal laws. Okay? What happened? Framework. हाँ. They have their own legislation. EU legislation करके there is a, अगर आप EU की साइट खोलेंगे there will be different parts. वहाँ पे EU commission होगा, EU legislation होगा, right? EU parliament भी है, by the way, right? They have the parliament also. So they are working as the union जिसके पास सब कुछ है, ठीक है? They have the execution also. They will execute the things. They have that body also. हाँ हाँ, so laws है ना यहाँ पे, ठीक है? So have their own things, ठीक है? Legislation, parliament, execute, they have this, and they have to also make sure that whatever they are doing, that has to be in the for the betterment of all the countries, right? So they have this. अगर आप खोलेंगे कभी site, who is there is a uh, representative of EU also, right? I'm forgetting the name of that person. So then you have to, she comes in the news or more often. So EU legislation, EU Parliament. So you have to see the site. एक बार आप site खोल के देखेंगे. In fact, I'll show you the site here only, right? On Google, I'll show you the site that how the things are. So EU is very good. Do you think that EU is good or the different modern states are good? I mean, nation states like India. Huh? What is the difference between India and America? In terms of when we say India is a union and we say that America is a federation. आपने देखा Article 1 of Polity? What is that? वो एक अलग बात है. Federalism अलग बात है. What I'm telling you, have you seen the first article of Constitution of India? What does it say? India, that is Bharat, shall be the union of states, and America is federation of states. What is the difference between union of states and federation of states? Hmm. 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 Partially correct, almost there. So federation means when you are bringing all the states together and then you are making USA, right? If any country wants to get out of it, they can. Okay? But in India, that is not the case. In India, we have a territory. Territory is considered as nation, right? And that nation is divided into different states. Okay? So that is what. So दोनों में difference है, दोनों बातों में difference है, right? So यहाँ पे भी ये है कि although they are not one, they are coming together, but anytime one can get away from it if that laws is not suiting them. UK को ये law suit नहीं कर रहे थे, therefore they exit. In 2016, the proposal was given. In 2020, finally they got out of that. Okay? There are many reasons behind that. We'll do it when we complete the course. We'll also discuss about what actually happened in UK and why they took this decision of Brexit. We will have the discussion. Okay? Next is direct application of law. नहीं. Next लिखिए direct application of law. Direct application of law. And next, independent institutions. Independent institutions. पहले आप मैप देखिए. Just have a look at it. Can you understand these states? Although I've written in this thing. What happened? Just look at this map.
Look at this map. समझ में आ रहा है? I want you to analyze and I'll ask what you have analyzed in this. These two maps that I have to show to you, this and another. What can you observe in this? Huh? Huh? क्या? Different countries. Can you tell me what is how strategically this area is important? Now you understand the word strategically, so you can tell me. Tell me everything that you can observe about this area. Hmm? Transportation network by कैसे? मतलब you're talking about this landmass? ठीक है, landmass ठीक है. उसके अलावा? हाँ? What else you can observe? Everyone. What you can observe in this? Sea is there, right? What sea is there? हाँ. हाँ. Sea. This is the main sea that we are talking about, which is Mediterranean Sea. From there, this is an important route for the European countries to trade, right? Not only for this, it's a vice versa. Like for this, European countries also for the to trade with other countries, and other countries also trade through this, right? Suez of Canal is there, and then it is transported like that. Apart from sea, what else they are surrounded by? What else they are surrounded by apart from sea? Ocean, very good. This is what? Atlantic Ocean. You have North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean, right here. Then you have a sea here, which you call it as Mediterranean Sea. Those are the small seas, Adriatic, Aegean, or Caspian or Black, internal seas, and we'll talk about them later. Then you have the Baltic here, and ऊपर आपका है Arctic, right? So from everywhere, this whole union is surrounded by what? Water, right? So do you think this is important for their trade? Very important, because navigable routes, we call this as navigable routes. And when you have the navigable routes, then you can transfer what? You can do a lot of trade from this to America or from this to other parts of the region, right? Apart from this, you're also having some Scandinavian countries which you call this, right? So this is not a part of it. These are the part of Scandinavian countries. Then you have these, see, France, Belgium, Germany, Denmark. They are
exactly near to the sea, right? This is also near to the sea. Your Italy, France. This is near to sea as well as ocean, right? Then Spain is all surrounded by here Atlantic Ocean and here Mediterranean Sea, right? This is, so you have to see this also, Italy also, Greece, Bulgaria, and then in between you have some landlocked countries. Can you see some landlocked countries? Okay, this is Slovakia, Hungary, Croatia, right? Poland, yes, right? No, they are the part of European countries only. I'll tell you. Okay. Now this is Lithuania, Latvia, Estonia. Okay. These are some of the parts. So you have to be okay with this map so that whenever I will be dictating you the parts of the country which are actually the part of EU, then you will be able to understand कि कौन कौन सी country part है किसका EU का. ठीक है. Can you get this in the first class you? नहीं. थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ. ठीक है. Where you are having a doubt? पूछिए. ओके हाँ बेबी देस एशियन कुछ ही है. हाँ हो सकता है. हो सकता है अभी हाँ हो सकता है. राइट यू राइट. बताइए. बताओ बताओ क्या 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 बताइए. बताओ बताओ क्या चीज है. धीरे धीरे समझ में आएगा. हाँ बताओ क्या डाउट है. एक डाउट पूछो देन यू विल हैव दैट थिंग. पूछिए. what actually you're not getting in this EU का कॉन्सेप्ट देखिए. EU कॉन्सेप्ट पहली बार आप सुन रहे हैं यूरोपियन यूनियन. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए द पॉइंट इज व्हेन कंट्रीज आर सेइंग दैट वी वांट टू क्लब टुगेदर टू मेक एवरी कंट्री बेटर. ठीक है मैंने क्या समझाया पहले ही क्लास में दैट वी हैव टू मेक दिस एरिया बेटर. ठीक है फॉर एग्जांपल नाउ दे डिसाइडेड दैट वी ऑल विल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक वन एंटिटी. ठीक है जब हम सारे साथ में आ जाएंगे टू मेक वन एंटिटी फॉर व्हाट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्रीज. हम क्या चाहते हैं दैट वी शुड वर्क एज अ यूनियन. जब कोई भी चीज यूनियन में आ जाती है तो दैट बिकम्स बेटर राइट. सो व्हेन इट दे आर कमिंग टुगेदर सो किसी ग्राउंड पे तो साथ में आएंगे राइट. क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं. ट्रेड्स, देयर करेंसीज, देयर एग्रीकल्चर, देयर डिफरेंट लॉज. उस बेसिस पे सारे साथ में आएंगे. तो मतलब जर्मनी अपने हिसाब से कुछ भी एक्ट नहीं कर सकता है. If the Germany is a part of EU, then they cannot take their own unilateral decisions, right? In terms of, otherwise ले सकते हैं कुछ कुछ चीजों में उनको है that they can take their own. India अगर जर्मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं they have that authority, they have that sovereignty. We are not stopping that. But when it comes to make this better as together, then they do have a responsibility towards EU also. Because EU will check that whether this thing will going to help them or not. That means you're giving a power to some union that will make laws for you in some of the sectors, not all. Okay, right? So when they will be given some of the power, then what will happen? They have to abide it also. That's why it is binding. ठीक है बाइंड है या नहीं है. बाइंडिंग है. अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो nobody will follow. फिर तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है. Right, when you have the laws and if you are not putting that binding नहीं करोगे तो फिर how the things will work. So this is what. Okay, now apart from that you have this different countries. अभी आपका first class है. You've not seen, have you seen maps ever? हाँ, do you have at least आपने या first class है GS या geography economic कुछ भी इससे पहले भी पढ़ा है. कुछ भी नहीं पढ़ा ना. हाँ that's why. Correct. तो फिर तो हल्का सा टाइम लगेगा क्योंकि सॉवरेनिटी नहीं समझ आ रहा होगा आपको है ना क्योंकि पॉलिटी नहीं पढ़ा है. तो वही बात है. तभी मैंने बोला सॉवरेनिटी मत बोलो इसको डिसीजन मेकिंग पावर बोलो. ठीक है डोंट लाइक दैट. सॉवरेनिटी मतलब खुद की पावर. आपका क्या है
व्हाट हाउ डिसीजन, क्या आप डिसीजन ले पा रहे हो अपने लिए? अगर वो चाहता है जर्मनी किसी भी चीज से कुछ अलग से ट्रेड करना है, फिर कुछ अलग ही वो बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ईयू, तो दिस विल नॉट वर्क, ठीक है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इट, इधर दे हैव टू डू एग्जिट। अगर वो अपना कुछ करना चाहते हैं, जैसे यूके ने एग्जिट किया था इस यूनियन से, तो वो वैसे कर सकते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली विल गेट। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस अपार्ट फ्रॉम हिम? हाँ बताइए, तभी आई विल मूव फॉरवर्ड। आपको एवरीवन पीछे, आपको गौतम, ठीक है, अर्शी समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको मंगलम, योर्स इज आल्सो फर्स्ट क्लास ना, आपको कुछ डाउट? ठीक है, ओके, हाँ कुछ डाउट है? गौतम बताओ, धीरे धीरे आएगा समझ, ठीक है। अभी मैंने इंडिया ईयू स्टार्ट नहीं किया रिलेशन, इसलिए सबसे पहले आई एम टेलिंग ईयू, व्हाट इज ईयू, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव स्किप दैट पार्ट। इंडिया ईयू आप रिलेशंस पढ़िए और बोल देती ग्रुप ऑफ स्टेट्स है बस, बट माय कॉन्साइंस डिड नॉट अलाउ मी टू डू दिस टू यू ऑल। चलिए लिखिए, अब धीरे धीरे जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। अब प्लीज बी प्रेजेंट हियर, अगर आप लिख रहे हैं ये नहीं सिर्फ डिक्टेशन के लिए, अब आप जब लिखेंगे तो देखेंगे यूनियन कितनी कंट्रीज का कंसिस्ट है, क्यों कंसिस्टेड है, सिंपल इंग्लिश है। चलिए लिखिए, यूरोपियन यूनियन is a unique economic and political union. European Union is a unique economic and political. Underline the words economic and political. Who will explain me why I said economic and political? Any one of you who can tell me. इतना explanation के बाद किस कौन सी कंट्रीज में? Very good. Economically they are good together. Excellent. What about political? Excellent, Divya. चलिए आगे. Between 27 countries, economic and political union between 27 European countries, full stop. They work together. Purpose है ये, ठीक है, फोकस करेंगे इस पे. They work together to improve the lives of people in Europe. Lives of people in Europe. Next point. EU has worked for peace. EU has worked for peace, comma, prosperity and well-being of its citizens, well-being of its citizens over 60 years. Over 60 years. From 6 फाउंडिंग कंट्रीज. सी जब ये यूनियन स्टार्ट हुआ था ना, तो इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल, ओनली ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज. इट इज जस्ट लाइक दैट. सिंपली समझिए, आपका एक एरिया है, सिंपल, बहुत सिंपल समझिए. आपका एक छोटे से चीज है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आपके पहले आप 2-3 फ्रेंड्स जो आप बहुत क्लोज हैं, आप दोस्त बने, एंड यू विल लाइक कि वॉट एवर यू विल डू, you will also tell me there is a transparency in all of us. At least some of the sectors we will share in sense कि अगर we are going for the recreational activity, if we are going outside, if we are going for the having a dinner or lunch or whatever on weekends, we will do it together. ठीक है, आप अपना शेयर रखेंगे and then we will have that corpus and we will do it together. अब कोई भी एक भी फ्रेंड आपको डिच करेगा तो क्या होगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द यूनियन. अब क्या होगा कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आपके और भी फ्रेंड्स आएंगे, फिर और भी दोस्त बनेंगे, ओनली द ट्रस्टेड पार्टनर्स, एंड उनको भी ये बाइंडिंग होगा कि आप लोगों को ये करना है. क्यों करेंगे आप लोग? क्योंकि आपको अपनी लाइफ क्या करनी है, बेटर करनी है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स व्हाट, सपोर्ट. छोटी सी कम्युनिटी में ही देख लीजिए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू विद रिस्पेक्ट टू हम जो करते हैं. अब सेम चीज कंट्रीज पे अप्लाई कर दीजिए. अब कंट्री साथ में आ गई है,
ठीक है। लेकिन ये बाकी कंट्रीज अब ये नहीं बोलेंगे कि आप मैम ये तो ब्रिक्स जैसा लग रहा है, ठीक है। क्यों थोड़ा सा ब्रिक्स जैसा नहीं है? क्योंकि हम अपनी सॉवरेनिटी नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स में, एससीओ में अपनी सॉवरेनिटी नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज, रशिया विल डिसाइड कि हमें किसके साथ ट्रेड करना है या किसके साथ हमें ट्रेड नहीं करना है। वो हमारा खुद का डिसीजन है। वी आर अ रीजनल ग्रुप इन दैट, ब्रिक्स रीजनल ग्रुपिंग, राइट। सार्क इज ऑल्सो रीजनल ग्रुपिंग। तो हम साथ में मिलके फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल वी आर डूइंग। पर यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एवरीथिंग दे हैव गॉट फ्री, जैसे ट्रेड्स, टैक्सेस, काफी चीजों में ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आया समझ में अब कि वहां पे क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए यूरोप हैज लेड, नेक्स्ट, हाँ अच्छा यहाँ पे देख दिया, 6 फाउंडिंग कंट्रीज और मेंबर स्टेट्स in 1950s, of member states in 1950s, it has grown, it has grown into the union of, into the union of 27 countries, into the union of 27 countries, right, with almost a population of, with almost a population of 450 million. This is the entire population of EU. 450 million. Is it the entire population of EU? Huh? Yes. What is the population of India? Hmm? Total population क्या है इंडिया की? हाँ? Correct. Who has said this? हाँ, correct, correct. Population इंडिया की, हाँ? सेंसस नहीं हुआ ना उसके बाद, मैं क्या करूँ फिर? मेरी गलती नहीं है, सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, मेरी गलती नहीं है। बहुत ज्यादा है 1.5, it's too much. So I was reading a quote that it is not that any country who is having a more population will dominance, or having a more technology will dominance, or having a more territory will dominance. अगर ऐसा होना होता तो इंडिया सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है अभी. It is a right balance of all the things. Your technology, your population, your population means your human resources, and how well cultured the country is, how dedicated the country is towards its vision. That makes a country powerful, and that's why they have a hegemony. Hegemony means dominance छोड़ना अपना पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है. So ये चीज I was just reading and yesterday and it just hit me. लिखा तो सही बात है, right? Otherwise रशिया सबसे ज्यादा dominate कर रहा होता है. Land area is so big, but what if that whole land area got added? What is the use of this then? If population is so big, but then they are not skilled, right? Even a small country like Israel can get the superpowers to their, back to their territory. Why? Because they have excellent human resource. They are one of the most intelligent people ever we can find on the planet. One of the people. They are highly, highly intelligent. All Israel citizens, like Jews I'm talking about. Population इतना कम है, but the kind of technology they have put in, amazing. ठीक है? All right. Write down. Europe has led to the creation of world single market area. It has led to the creation of world single market area. Can I call it as a single market? Can I call it as a single market? Right? Okay, write down. Where people, comma, goods, comma, services, and money
can and money can move freely. Move freely. Freely. The countries that belong to EU, the countries that belong to EU believe that by working together, by working together, the countries which belong to EU believe that by working together, they are stronger, they are stronger and better. They are stronger and better, able to tackle today's big challenges, today's big challenges, such as such as climate change, such as climate change, such as climate change and digital transformation of our society. Digital transformation of our society. So do you want to write who are the part of it? Write down. Austria. Also, I will telling you which where these countries are, right? So that you should know कहाँ पे ये countries हैं. This is a kind of activity which I wanted to do because you should know. कोई भी अगर question आएगा year का, then you should have the idea कि कौन सी country कहाँ पर है. First one is Austria. ब्लैक से दिखेगा या इससे दिख रहा है? व्हाइट से दिख रहा है? अच्छा. ऑस्ट्रिया. दिस. जर्मनी, रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया इसके पास में. ठीक है, लिखिए. ऑस्ट्रिया. फर्स्ट इज ऑस्ट्रिया. सेकंड इज बेल्जियम. बेल्जियम. नेक्स्ट इज बुल्गारिया. BULGARIA. और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या है? यूक्रेन. हियर टर्की. ये छोटा सा मोल्डोवो है. ठीक है. और पोलैंड आपका ये ना, दिस इज योर ऊपर. साइड में क्या है यहाँ पे? नहीं, ब्लैक सी के साइड में. एक्सीलेंट. जॉर्जिया. एक एक्टिविटी कर रहे, एक ही बारी में नहीं आएगा. जब तक बैठोगी नहीं मैप के साथ तब तक नहीं आएगा. ठीक है. आई हैव ऑल्सो सिट विद मैप बहुत बार. ऐसे नहीं आएगा, एकदम से नहीं सबको समझ में आएगा. सो धीरे धीरे करेगी. लेकिन आई हैव टू स्टार्ट समवेयर, तो यू हैव टू स्टार्ट ना, किसी ने तो स्टार्ट करना पड़ेगा. तो आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे ब्लैक सी के राउंड, कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. स्टेट्स में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आप इतने छोटे क्वेश्चन भी मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ गुड ऑब्जर्वेशन इन मैथ्स. राइट. लिखिए बल्गेरिया. देन लिखिए क्रोशिया. दिस इज क्रोशिया. नेक्स्ट सिप्रस. यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर है आइलैंड सिप्रस. यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैप्स में दिखेगा, पूरा नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ द स्पेस. अभी उस वो देखना मैप यहाँ पे कहीं है. ठीक है. लिखिए सिप्रस. नेक्स्ट लिखिए डेनमार्क.
Denmark. Next is Estonia. 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 हाँ ये रहा Estonia. Next is Finland. Here. Finland. The next is France. फ्रांस दिख रहा है कहीं? ये रहा. ठीक है. Germany. Here. Next, Greece. Then you have Hungary. Spelling यहाँ पे गलत लिखी है Hungary की. Write down. It is not this Hungary. It is Hungary. Hungary. Then write down Ireland. यहाँ पर है. And Ireland is divided into two parts, north and south. UK is favoring which one? UK के पास कौन सा है? Ireland में कौन सा है? South, north. South. पता था आपको? फ्लूक नहीं क्लास में. चलिए. Then Italy. One of the best place where you can go for vacation. Italy. Huh? One of the best place. Like if you have a chance, then this route is amazing. This Italy, this one Croatia, Austria, this Hungary, Romania. This is the best place, right, to have a vacation. मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा मौका. चलिए. Then Latvia. Latvia. Who all like to go for vacations? हाँ इंडिया का नहीं बाहर का. कौन सी country do you want to visit? You want to? That is a very nice place. You can see Northern Lights. Yes, मैंने उस पे वीडियो भी बनाया अभी Northern Lights पे. और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है. Amazing. And बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है. मतलब उसके प्राइसेस बहुत कॉस्टली भी है. नहीं नहीं मतलब अच्छा है बिल्कुल. वो अपने अपने ऊपर है. डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली गो. और स्पेन. स्पेन भी बहुत अच्छा है. स्विट्जरलैंड. यस. एंड और नेपाल. यस वेरी नाइस. अभी मत जाना लेकिन अभी नहीं. अभी नहीं. और बताइए. आप बताइए. हाँ वो भी अच्छा है. अपने अपने लेवल पे सारी चीजें अच्छी हैं जो आप बोल रहे हो. अपने किसी अपना एक जोन ऑफ इंटरेस्ट है. राइट. ठीक है. ये पब्लिकली बताऊं. ठीक है. तो ठीक है. सो यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट. सबका अपना अपना है. ठीक है. और यूएसए किसी ने नहीं बोला अभी तक. अच्छा यूएस. अलास्का कौन? लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखेंगी. फिनलैंड, स्वीडन और ये स्वीडन नहीं, नॉर्वे एंड मोस्टली फिनलैंड. ठीक है. हाँ इफ यू आर टू मच इनटू साउथ अमेरिका वाला थिंग. हाँ तो डेफिनेटली पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट एरिया अ लॉट. नाउ पीपल आर स्टार्टिंग गोइंग टू लॉट ऑफ दिस. जब वो यहाँ से बोर हो जाते हैं प्रायोरिटी पे यही रहता है. जब यहाँ से देन दे हैव रोम देयर. तो उसके बाद जाके वो फिर साउथ अमेरिका एक्सप्लोर करते हैं. और दिस एरिया लाइक यहीं पर ही है. ये रहा. क्यों वहां पे क्यों है? मोनाको इज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट like rich of the world. Why? टैक्स लॉस. हाँ टैक्स लॉस की वजह से. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज लिथुआनिया. राइट डाउन दिस. देन नेक्स्ट लग्जमबर्ग. LUXEMBURG.
BOURG, Luxembourg. Then there is Malta. Malta is also here only यहाँ पे. Malta. MALTA, Malta. बहुत कम सुनते हो उसके बारे में. Then there is Netherlands. 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 ये ना. हाँ, राइट राइट राइट. हाँ हाँ, नहीं उसकी यहीं पर गई है. एक्चुअली वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है ना, जो आर्किटेक्चर है, दैट हैज नॉट बीन चेंज. करेक्ट. वो जब वो चेंज नहीं होगा तो यू विल फील सम काइंड ऑफ अटैचमेंट टू दैट एरिया. और अगर सब कुछ आप मॉडर्नाइज कर देंगे, सी दुबई इज गुड फॉर दिस थिंग बिकॉज यू हैव टू सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, द वे दे हैव ट्राइड टू बिल्ड दैट अप. तो वो चीज है. बट एक वो होता है ना, व्हेन यू हैव टू सी द हिस्ट्री, सो फॉर दैट दिस एरियाज आर गुड. हाँ, ये पूरा एरिया है. हाँ, ठीक है. किसी ने साउथ ईस्ट कंट्रीज नहीं बोली, राइट? या साउथ कोरिया एंड जापान, ये सब इज वन ऑफ द गुड प्लेस. राइट, राइट डाउन. नीदरलैंड्स हो गया. देन पोलैंड. देन पोर्टुगल. देन देयर इज यहीं पर ही है, यहाँ पे. यहाँ का ये नहीं है, मतलब ये है बट ये नहीं है, ये वर्ड नहीं है. हाँ, पोर्टुगल. बट ये स्पेस मुझे कम लग रहा है, इतना कम नहीं है स्पेस. अभी मैंने बोला ये नहीं है, स्पेस कम लग रहा है. ये गलत मैप थोड़ा बनाया हुआ है. ठीक है. राइट डाउन पोर्टुगल. देन राइट डाउन रोमानिया. रोमानिया. देन राइट डाउन स्लोवाकिया. राइट डाउन स्लोवाकिया. स्लोवाकिया हो रहा ऊपर, दिस वन. ठीक है. एंड देन स्लोवाकिया देखा, राइट. दे हियर इट्स स्लोवेनिया. ठीक है, यहाँ पे आपका स्लोवेनिया. स्लोवेनिया. एंड देन देयर इज स्पेन. स्पेन, स्पेन. Then there is Sweden. अब आप लर्न करिए सारी कंट्रीज एक बार, जस्ट हैव अ ग्लैंस एंड लेट मी नो. तो एक और कंट्री ऐड हुई है आई गेस, बिकॉज रिसेंटली. लिख लिया हमने, नहीं लिखा क्या? कितनी हुई है? आई थिंक रिपब्लिक वाली नहीं हुई है. चेक रिपब्लिक. ठीक है, लिखिए. हो गया, पहले हो गया था. हाँ, रैंडमली आई विल आस्क एनीवन. आपको समझ, आर यू गेटिंग? अभी धीरे धीरे आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इंग्लिश. इंग्लिश इज फाइन. अच्छा, लेटेस्ट क्या है?
ठीक है, नहीं पढ़ना, लर्न नहीं करना, करो। कौन क्या बोला, टाइम हो गया? इसने बोला टाइम अभी 11 o'clock तक होगा, अभी उसके बाद आपको 10, हाँ वो वाला चीज 1.5 का। ठीक है, आप ऐसे तो करोगे नहीं, यहीं पे मेरे साथ ही कर लो डिवाइस से। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना? मुझे पता नहीं था यार। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी स्टेट्स कहाँ पर है फाइनली। ठीक है, सी this is your part of Eastern Europe. Why I have to show this? This is a part of Eastern Europe, and this is Russia, right? Why I have to show this part again and again to you? Yes, because once they were all the part of it, USSR. When I talked about 1991, your when the disintegration of USSR happened, क्यों हुआ था disintegration? Simple words में, because they wanted to expand what communism, and they wanted to take all the territories which were surrounding them. It was they wanted to go for expansionist thing. Yes, yes, but the point is they overreached themselves, overreached in terms of resources, overreached in terms of their um, the investment. So obviously they will have to suffer for that. Now the thing is, Russia is trying to take Ukraine. What is the main reason for Russia taking the Ukraine? And also they have taken earlier this major part of it, which is known as Crimea, right? You cannot see it here. This is Crimea, CRIMEA. ये सिर्फ नॉलेज की बात है जो हम आगे जाके यूज करेंगे, इसको डोंट टेक इट लिटरली कि आपको लिखना है। दिस इज इंडिया और रशिया और यूक्रेन का वॉर सबको पता है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास। ठीक है, अब वो क्यों करना चाहते हैं वॉर, उसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज हैविंग एक्सेस टू ब्लैक सी, दिस इज योर ब्लैक सी। रशिया इज नॉट हैविंग अ गुड नेविगेबल रूट्स अराउंड इट, या तो ऊपर है विच इज फ्रोजन, विच इज योर आर्कटिक सी। अगर कोई चीज फ्रोजन रहेगी ऑटोमेटिकली nobody can navigate, nobody can trade with it. Or either they have this on the right side they have which ocean, your Pacific Ocean, इस side Pacific Ocean है, right? यहाँ पे your East China Sea, South China Sea, from there they have to trade and नीचे से इंडियन ओशन एक्सेट्रा वहां से फिर ट्रेड होता है। ठीक है, और या फिर आपका ये तो नेविगेबल है नहीं, राइट? और उसके अलावा इट इज ऑल लैंडलॉक, मतलब यहाँ पे तो कोई रूट है नहीं, ऐसा डायरेक्ट एक्सेस है नहीं। सो दे वांटेड टू हैव द एक्सेस टू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, because for any country to have a good route, to any country to have a good productivity in terms of trade, otherwise also for their protection they need a good route like that. So they wanted to have Ukraine, and that's why they are not stopping, and they are also not having a vision to stop unless they will take Ukraine under its whole, I mean they will have the annexation of this area. Okay, apart from that Ukraine is also rich in resources, right? Okay, fertile land it is, क्या उगता है वहाँ पे? You have sunflower, your wheat, etc. They are very good in they have a good productivity. So in that way also it is good, and then they will come to close to this thing. But point is here that why USA does not want that they should expand. कैसे अब आ जाएगा? हाँ हाँ, so उसमें प्रॉब्लम क्या है? यूएसए को क्या प्रॉब्लम है?
there has to be a reason. क्यों क्यों नहीं चाहता इन्फ्लुएंस? नाटो कंट्री का भी बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा आई विल गिव डिस्क्रिप्शन, अभी बताऊंगी इसके बारे में भी। क्यों? क्यूबा तो अमेरिका के पास है, वो क्यूबन क्राइसिस में वो एक अलग पॉइंट है, आई टेल यू। क्या प्रॉब्लम क्या है? सी capitalism भी, and also if you see the territory of this area, this territory if you see here, तो there was a scholar बहुत पुराने जमाने में कहते थे, मैकाइंडर नाम के थे, वो ये कहते थे कि if any country will be able, this is a heartland of the country, ये वाला, ये इसको heartland माना जाता था, ठीक है? Anybody who controls the heartland controls the island, and who controls the island controls the world. मैकाइंडर, हाँ उसको उनको भूल जाओ, मैंने कहा है। मैंने बताया ये, मैंने थ्योरी अभी बताई है, मुझे मेरा नाम याद है, मुझे याद करो। हाँ ठीक है। सो मैं ऐसा बोलती हूँ कि इफ दिस इज अ हार्टलैंड, ओके, so this is your heartland. तो अगर ये हार्टलैंड है, राइट, if somebody would control this, will control the whole island, and one who controls the island controls the world, right? ठीक है, that is a different thing. अभी it's too early to come to the conclusion, ठीक है? So सबसे पहले आप ये समझिए, और ये बात सबको पता है, because strategically this area is very very important. That's why कभी भी यूएसए ने सबसे पहली बात यूरोपियन कंट्रीज और रशिया को पास में आने नहीं दिया. अगर they would have been a one unit, and USA would not have any hegemony. Are you understanding? अब रियल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रही है. अरे 2 मिनट रुको, लेट मी कंप्लीट. जब इसको बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दैट इज स्टार्टिंग, ठीक है? तो उन्होंने क्या नहीं किया, they never wanted this and this to come together, और सबसे बड़ा हाथ उसमें यूएसए का है, ठीक है? ठीक है ना? So earlier they did not wanted to get into this. ऐसा नहीं है शुरू से रहा है. If you see the Monroe Doctrine, बहुत पुरानी डॉक्ट्रिन है, वो बोलते हैं कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, वो कभी भी किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे. लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, बाद में जब उनको इन्वॉल्व किया गया वर्ल्ड वॉर के अंदर, तब उन्होंने बोला ठीक है, और उसके बाद से देयर इज नो स्टॉपेज. दैट्स व्हाई यू हैव नेटो आल्सो. नेटो के थ्रू यूएस रशिया का एक्सपेंशन कंट्रोल करता है, नेटो के थ्रू. गेटिंग द पॉइंट? नेटो के बेसिस आर स्टिल हियर, right? So then you bases are still here. So that means one is they are trying to contain Russia. They will never let it expand, right? And next is this thing, okay? Then you have to understand few of the things in this. NATO, etc. When I try to explain, जब आपको NATO में समझाऊंगी या फिर आपको रशिया का रिलेशन समझाऊंगी, why I have to explain this thing? Because you need to know what is a part of Eastern Europe and what is a part of Western Europe. When I say, when I'm dividing the European countries into two parts, then you should know what lies in the Eastern Europe and what lies in the Western Europe. They are divided like this. कितने लोगों को ये बात पता है? How they are divided? नहीं, काफी लोगों को नहीं पता होता, ईस्टर्न यूरोप वगैरह नहीं पता होता. अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली बनाया है, नॉट लिटरली, डोंट टेक इट. अभी सिर्फ समझो, अभी मोबाइल लेके आप इसे सर्च करने लग जाओगे ना, वो समझ में आएगा ना जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आएगा. इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, मेरा चेन ऑफ थॉट टूट जाएगा ऐसे. लिखो, खुद पढ़ना यू पूरा,
चलो, नहीं खुद पढ़ो, अब ईयू इंडिया रिलेशंस लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए, करिए। राइट डाउन यू इंडिया, राइट डाउन अबाउट यू, लिखिए पूरा। राइट डाउन अबाउट यू, चलिए आप ये लिखिए। एंड टेल द यूटिलिटीज ऑफ इट। Write down in 250 words. Good morning. ये ठंडी हो। Okay, have you written? ईयू और इंडिया के जो रिलेशंस में है, आई एक्सप्लेन और आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक है, अब बताइए क्या क्या लिखा आपने ईयू के बारे में। वेरी गुड। और हम्म
करेक्ट, एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, इतना लिखा है। और किसने कुछ लिखा है ईयू के बारे में? हमने इतना पढ़ा है, आपने लिखा है? वेरी गुड, ठीक है, आपने क्या लिखा है? इतना छोटा सा आंसर? अच्छा, मतलब यहीं से स्टार्ट है या पीछे भी है कुछ? इतना सा आंसर नहीं, यू हैव टू राइट लाइक हर, जैसे उन्होंने लिखा है ना, लाइक दिस, ऐसा लिखना है, ठीक है? ओके, ठीक है। बताइए, क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत होते हैं, पूछिए। क्वेश्चन राउंड है, पूछिए पूछिए। पूछो। हाँ, एनवायरमेंट पे हो चुका, अब उस पीरियड क्यों, सिलेबस खत्म? आप तो यू वर ऑन वेकेशंस, घर पे चले गए थे ना होम टाउन। ठीक है, अब सीधा हम इंडिया ईयू पे आ रहे हैं, उनके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। इतना ही मुझे समझाना था, ठीक है? और जिसको बहुत ज्यादा समझना है उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी अलग से ईयू के लिए, ठीक है? So I was planning to include in this classes only, but no longer. So if somebody has too much of interest, then let me know. Okay. Right. Come to the India-EU relations. क्या चल रहा है आजकल इंडिया ईयू रिलेशन में? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड, वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि सब कुछ हम लोग आउट ऑफ द टैक्स कर देंगे क्या? हाँ, बैरियर्स कुछ कुछ पॉजिटिव लिस्ट है, उस पॉजिटिव लिस्ट की जो आइटम्स है वो ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू द नेगेटिव लिस्ट, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? Okay, so why they do not want to do it? Why we are stopping some of the items from coming from there? It will affect our local market. Everybody understand that? ये तो simple सी बात है कि हम लोग अगर किसी से ट्रेड कर रहे हैं तो we have to also clear internal market कि उस पर कोई फर्क ना हो, ठीक है? So that is what we have to do. अगर फर्क पड़ेगा तो क्या होगा? क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? बिल्कुल भी नहीं, राइट? क्यों नहीं होगा? बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारी खुद की डोमेस्टिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं होगा, राइट, और आवर लाइवलीहुड विल बी impacted, then what will happen? It will have a, yes, it will have an inverse effect. What kind of inverse effect? Agriculture will be impacted, or especially employment, yes, the product prices can be affected. Then our make in India vision will be impacted. Manufacturing sector, if we'll try to bring a lot of other things, और बताइए, मार्केट सैचुरेशन होने का क्या मतलब है? बहुत हैवी टर्म यूज कर दिया आपने। सबको नहीं समझ में आएगा, ऐसे यूज करिए जो सबको समझ में आए। लिखिए, अब इंडिया ईयू, सी अब हम ईयू की बात कर रहे हैं, मतलब सारी कंट्रीज। अब वी आर नॉट डूइंग इंडिया फ्रांस, इंडिया जर्मनी। वैसे इंडिया फ्रांस इंडिया जर्मनी अलग से वी डू द ट्रेड, ठीक है? दैट इज ऑल्सो देयर, हम अपने अलग से डील करते हैं उन लोगों के साथ। इंडिया ईयू, इंडिया जर्मनी, इंडिया योर दिस इटली, ये सब हम करते हैं, ठीक है? राइट डाउन। इंडिया यूरोपियन यूनियन relations, India European Union relations have been time honored and growing. Have been time honored and growing.
These ties can be improved. Ties, TIES. These ties can be improved by boosting bilateral boosting, BOOSTING, boosting bilateral physical, digital and people to people connectivity. People to people connectivity. Full stop. Write down. They have a long standing relationship. They have a long standing relationship. Full stop. Their ties date back to their ties date back to 1960s. Their ties date back to 1960s when India was among the initial group of India was among among the initial group of nations to establish diplomatic relations with EU with EU. Next point. EU is the world's leading economy. EU is the world's leading economy as well as trader in services and manufactured goods. Services and manufactured goods. Full stop. It is the largest single market in the world. Largest single market in the world. Stronger India-EU relations. Stronger. Next slide में लिखिए. Stronger India-EU relations was envisaged. ENVISAGED. ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. ऐसे वर्ड्स आपको मेंस में यूज करने हैं. Envisaged, envision, ठीक है. और आपका ऐसे वर्ड स्ट्रेंथनिंग, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं. एनविसाज बहुत, इफ यू सी यूपीएससी का टॉपर टीना डाबी, उनका अगर एक बार आप कॉपी देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैज यूज्ड द वर्ड एनविसाज्ड, ठीक है. और मैक्सिमम टॉपर्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है. उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप वही वर्ड्स यूज करेंगे. डेटरेंस के लिए डेटरेंस ही यूज करेंगे. काउंटर बैलेंसिंग एक्ट के लिए काउंटर बैलेंसिंग एक्ट ही यूज करेंगे. बैलेंस ऑफ पावर इज बैलेंस ऑफ पावर ओनली, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन अनदर वे, ठीक है. तो ये आपको सोचना है कि क्या लैंग्वेज यूज करना है. आईआर में इतना सिंपल, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, इतना सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं होता है, ठीक है. बट only to make you customized to this subject, I am using this language. Otherwise, I would have told you when I was discussing this, I would have told you that this is because it is having a strategic location. Because of that, the dominance of this area is here, and hence it becomes important for the people to contain this area. अब आप ये सोचेंगे contain का क्या मतलब है, सोचते रह जाएंगे. Contain means, अभी बताते हैं. तो contain का मतलब है रोकना, ठीक है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है. दैट इज यू वांट टू कंटेन या फिर काउंटर बैलेंसिंग. अब आप सुन के दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल मत पढ़िए उसके बारे में,
तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ सॉर्ट है। या फिर आप सुन सुन के समझ लीजिए, होता है नहीं, देन समबडी इज हैविंग अ वेरी नाइस प्रोनाउंसिएशन एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपको सुन सुन के आपको समझ आ जाएगा, आप उसके जैसा करने लगेंगे। या दिस इज कॉल्ड रेटोरिक, बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, ठीक है। अब लिखिए डिक्शनरी, लिखिए EU relations, लिखो the strategy recognizes stronger India EU relationship was envisaged in the EU strategy on India, on EU strategy on India. Write down the strategy recognizes India's economic potential. Strategy recognizes India's economic potential, comma, the development challenges it faces, and the country's significance. So repeat कर रही हूँ, okay. The strategy recognizes या includes एक ही बात है, India's economic potential, comma, the development challenges it faces, and country's significance in geostrategy, as well as its importance in ensuring the realization of sustainable development goals. Sustainable development goals. फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, the strategy recognizes India's economic potential, comma, development challenges it faces, and the country's significance in geostrategy, as well as its importance in ensuring the realization of sustainable development goals. Sustainable development goal हमने सारे करे environment के अंदर. Now one should not have any doubt. ठीक है. Envisage का मतलब होता है what it holds in the future. ठीक है. क्या ये लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट देखते हैं हम EU के साथ अपना, राइट? क्यों लॉन्ग टर्म, क्यों? See, if you see the whole distribution of oil, if you see the whole mechanism, technology they are working on, they are working excellently on the renewable sources of energy. These people are highly advanced. If you see in the Human Development Index, they will always top. If you see in the Happiness Index, that is also fine for them. If you see in the liberalization in some sectors, then they are very, very open-minded. And also in terms of initiatives which are with respect to the climate change initiative, for example, green partnerships, for example, working on CCUS, which is your carbon sequestration project, जहाँ पे आपको कार्बन को yes वो करना है, आपको डिपॉजिट करना है, इंक्रीज नहीं, कम करना है, ठीक है, डिक्रीज करना है कार्बन को, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स. तो आप क्या करोगे उसके अंदर, दीज कंट्रीज आर वर्किंग वेरी वेल, दे आर in terms of their, because they have a good budget on it. If whether you talk about all EU countries, Germany, France, Denmark, Finland, your Norway, these countries are working very well on all these projects, despite of having this thing. For example, economy भी आपको चलाना है, आप उसको भी stagnant नहीं कर सकते. At the same time, you also have to shift, that is called the pivoting from this model to another model, which you call it as renewable source of energy, right? उस पे भी वो pivot कर. This is one, if somebody wants to really have the technology on these things, these are the best countries that with whom you can partner with. If you see the Denmark projects, they are doing amazing work on this carbon sequestration projects, your blue carbon, etc.
they are one of the best people who are working on this, right? कहने की बात है that USA is having this climate वाला change में सब participate कर रहे हैं, is very well, they are not. उनका oil production has increased, their consumption level is more than India, right? And then they say we are the one who wants to promote this. No, this is just on the papers, or maybe for they want to show, they want to build a brand sometimes apart from Trump, right? They want to build a brand कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, but उनका जो consumption pattern है, they are not stopping, they are saying हम तो ऐसे ही करेंगे. That's why they want to get out of lot of agreements also, जैसे Paris agreement है, वहां से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? So, but these countries are really very serious about this because they understand the importance of resources, and this country has understood the importance of resources from a very long time. आज से नहीं, उनके resources हमेशा इतने reserved रहे थे, कम रहे हैं, that उनका जो population है और resources है, उनका management बहुत अच्छा है. ऐसे नहीं resources कम है और आपका population बढ़ता जा रहा है. Never. They have a good management of resources versus their population. और उनको ये बात बहुत पहले से ही पता है, they are working on that very well. Despite बाकी countries जो है, they are not working on that. Resources इतना कम है, population बढ़ता ही जा रहा है, there is no stoppage, right? But these countries know how to manage everything, and that's why they are having the highest of the best laws. People are also happy. If you compare to different countries, people are also happy here. They have the good amenities, healthcare, etc. क्यों? Because human population is less. ठीक है? So in this, and also these countries are highly dependent on Russia. For what? Oil. अभी क्या बोल रहे थे Trump? They were saying that you take a lot of oil from Russia and we'll put the sanctions, we'll put the penalties to you, right, on you, 25%. What about these countries who are taking all the time the natural resources? All the natural gas is coming from Russia. Nord Stream 1, Nord Stream 2. There are two Nord Streams pipeline are there. War के time पे वो थोड़ा disrupt भी हुई थी. There was a news that they got disrupted, right? This whole, then they told, in fact that time also Joe Biden told them not to take it. But what they can do? There is no other option apart from that. But why don't you put sanction on them? You should put sanction on them also, because according to you, they are also funding the Ukraine war. अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया ने ऑयल ले लिया है रशिया से और इनडायरेक्टली यू आर फंडिंग द यूक्रेन वॉर, सो फिर तो दे आर आल्सो द परपिट्रेटर्स. हाँ, दे आर द पावरफुल डेवलप्ड कंट्री. मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? जस्ट बिकॉज देयर आर सम मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द नेटो, दैट्स व्हाई नॉट पुटिंग सैंक्शंस. दिस इज अ कंप्लीट पार्शियलिटी. फॉरगेट अबाउट दैट. जो इंडिया ऑयल लेता है रशिया से और इंडिया एक्सपोर्ट करता है फिर कंट्रीज में, उसमें यूएस से 3rd 4th नंबर पे. सेट, तो फिर कर क्या रहे हो आप? ठीक है, ऑल राइट. थैंक यू सो मच क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास यू विल प्लीज रिवाइज करना. रिवीजन के बिना ये चीजें समझ नहीं आएंगी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली, मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपको यू हैव गॉट इट. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, ट्राई टू रिवाइज.